Hi sir, how are you doing? So hello and welcome. I'm fine and welcome in fact to both of you in my humble residence. Thank you so much for seeing us. So कैसे स्टार्ट हुई इस हम्बल रेजिडेंस से? मतलब रेजिडेंस तो नहीं होगा, ये तो पहले खेत होंगे। यहाँ खेतों से और वहाँ पूरा का पूरा लबासना यारोज और डायरेक्टर जनरल तक पहुँचने की जर्नी। It's a long story. From where you would like to start? In fact, I would like Beginnings. beginning. So from the beginning, I'm from this village only, Jopakla, and from a very ordinary, humble family. My father was an agriculturist, and we were 11 children. Oh. I was the youngest son, and at that time, I was born in 1953. So at that time, though this area was backward, but culturally and environmentally, I feel this area was much better than what it is today. And since we were 12 children, and my mother died when I was 2.5 years old. So you can imagine how a man can look after 11 children on some land and 7, 8 or maybe sometime 10 to 12 animal stock. बहुत ही मुश्किल। But Aditya, I can tell you one thing. If you ask me who is your idol, I'll say my father was my idol. Oh. He was complete illiterate, and he tried to send all his children to schools. So I was the first child or the first person in this village who completed graduation. Oh, nice. And post-graduation. And again, I was the first person who joined the civil services in 1982 batch. Maybe perhaps in these regions, I was the first person who joined civil services. So you can understand from such a rural, economically backward area and coming up to that level when you are competing with the cream of the Indian society. Because I know most of my batchmates, they are from very well-to-do families, sons and daughters of IAS officers, IPS officers. And very few like me were from rural backgrounds. So for me, this journey was an achievement in itself. And somehow I reached in Mussoorie. Okay. कैसा था आपका लबासना का पीरियड? Well, initially I was subdued because my educational background was from government schools and couldn't speak fluent English at that time. And my batchmates, they were from Delhi or Madras at that time, Calcutta, and from rich families, and majority of them from very good educational background, St. Stephen's and whatnot. Convent schools. So initially I was subdued, but slowly my Haryanvi background, that subduedness was controlled. नहीं, हरियाणा के लोगों का तो एक्सेंट भी इतना वो रहता है। So लबासना में लगा ये? इनिशियली लगा, पर बाद में लगा कि सभी लोग बड़े फ्रेंडली थे और वहाँ के जो फैकल्टी थे उनकी बड़ी मदद थी। उनने बल्कि ये बताया, कुछ लोगों के अंदर जो ये कॉम्प्लेक्स था कि हम इंग्लिश अच्छी नहीं बोल पाते हैं, तो वो क्लास में कुछ बार बताया था कि गलत फहमी में मत रहिएगा कि ये लोग जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं इनको इंग्लिश नहीं आती। इनको इंग्लिश सिर्फ बोलनी नहीं आती, बाकी हर चीज़ आपसे अच्छी है। So that's how we started, and then they have their own set program. I did foundational course and went to Harkidun for trekking and for rural
training, I went to Bodh Gaya. At that time it was a Naxal infected area. Oh. So went there and had that initial experience going into the very, very Naxal infected areas and meeting some good, at that time was a very good deputy commissioner there, Mr. Sinha, dead honest, upright. And I remember, in fact, I was impressed with he invited us for a dinner and it started raining. So we couldn't go back to our circuit house. So he says, sleep in my house. So he says, where is the cot? So he says, नीचे बिछा लो चादर. So चादर नहीं थी, कहते पर्दे उतार लो. तो पर्दे उतारे तो रेत से भरे हुए तो कहते हट के सो जाओ भैया. But we were impressed with his thoroughness, honesty, and he was dead honest and very effective. So that was a sort of grooming we started learning from district administration. Enjoyed my stay in Navasa, and if I look back, so I'm 1982 batch, and some of my batchmates now are retired, but you know the Sakti Das, he is the governor RBI, Okay. and a lot of IFS officers were retired after serving as ambassadors, and some chief secretary, and DG police. So now I feel it's a big league. Okay. But still have a WhatsApp group with my batchmates. Okay, you are connected with them. We're connected with them. तो कैसा एनवायरनमेंट था? यू कैन स्पीक इन हिंदी. कैसा एनवायरनमेंट था लवासना में आप जब पहली बार वहाँ पहुँचे तो? और क्या एजुकेशन वहाँ पे किस तरीके का आपको सभी को मॉनिटर किया जाता है, सभी को टीच किया जाता है, क्या होता है वहाँ पे? Basically, environment was very friendly. We were very friendly, all of us, and at that age, you try to make friends. So we were very friendly, and there is a set program for classrooms. Different topics are given, and we have to study all this topic. And apart from topics, some physical trainings, and particularly I enjoyed horse riding there. I learned horse riding. So enjoyed there because it was so packed. You can't really tell in details ki kya hua. But thoroughly enjoyed, and they make you an officer there. Within a span of few months, you start behaving like an officer. So that was the training. That was the training, initial training, you can say. After that, we joined our own training institutions. We had our institution is the National Academy of Audit and Account in Simla, and there spent 1 year with my batchmates. So that was another grounding for my domain area. Okay, that is Yaros. That is Yaros. वो मोहम्मद अली जिन्ना का घर हुआ करता था. Jinnah's house. It's a very famous place, and historically and very famous place, and nicely maintained, I tell you. Okay. Beautifully maintained. If you have time, sometime you must go and visit that place. We have very good National Academy, beautiful academy. You will like it. Okay. Yeah. और आपकी फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ पे थी? From Simla, I joined in AG Audit Punjab in Chandigarh. So I was the assistant accountant general, and that was my first posting. So I remained there for 2-3 years, and then went after every 3-4 years you transferred. In my case, I had lot of transfer. In fact, if I can count, जितनी मेरी सर्विस है उसमें हर साल एक ट्रांसफ़र हुई है. अच्छा. सो मेरे डिपार्टमेंट में, मेरे काडर में, मेरे ख्याल में मैं एक ऐसा ऑफिसर हूँ जो जिसकी सबसे ज़्यादा ट्रांसफर्स हुई हूँ. अच्छा. So you were a SOC खेम का audit department. I was notorious in a way, because one thing is there, my colleagues, they liked me. My junior staff, they liked me. But I had
very different type of relationship with my bosses. Okay. Yeah, maybe because I'm too upright, too honest, and used to speak my mind. Okay. So what is your job about? Can you please कोई एक आसान भाषा में एक आम आदमी के लिए अगर आपके जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है जो सीएजी का ऑफिस है वो Yeah, होता क्या है वो? Okay, let me tell you. Because you know the CAG's position is defined in the Constitution of India. He is the most powerful person, if I put in Dr. Bhimrao Ambedkar's words. He is the most powerful officers. And CAG keeps a watch on all the expenditure of all the central government departments or governmental bodies. All expenditure he is auditing, all revenue of central government he is auditing, all expenditures of the state governments, all revenue of the state governments, and all governmental bodies. Okay. The CAG is auditing and reporting to the parliament. So from 1860 ये स्टार्ट हुआ सर एडमंड रोड जो पहले थे उससे लेके मुर्मू तक मिस्टर मुर्मू. Yeah, it's a long list. Yes, yes, it's long list. Don't want to name because naming a particular person doesn't look nice. But I had association with 5-6 CAGs and worked with Mr. Vinod Rai and looked after 11 states when I was working in CAG's office as a principal director. So that was the work I supervised of accountant generals of 11 states. I enjoyed that post. Okay. Yeah. How powerful this job is? It depends. If you are powerful, the job is powerful. Powerful in the sense, if you do your job dutifully, honestly, without succumbing to any type of pressure or जिसको कहते हैं कि आप किसी लोभ में आ जाना, favor or fear. So it depends. Structurally, it's a very powerful post. Accountant General is a very powerful post. He is independent. No one can interfere in his work. And he is reporting only to the Comptroller and Auditor General of India. And Comptroller and Auditor General of India, you know, is a complete independent body, like judiciary or I won't name other institutions, because the CAG's post is, in my opinion, is the most effective, powerful and supreme post in its own way. So, one thing I want to know, after serving such a long time in the department, in the government, one thing I realized that if the Indian Audit and Account Department, if it works properly, then lot of things can be improved. Okay. Yeah. So you can understand what I am hinting at. I don't want to go into the detail. So आप लोग सरकार का बही खाता करते हो sort of in सरकार का बही खाता देखते हैं बही खाता देखते हैं या ये कहिए कि सरकार की हर उस एक्टिविटी को भी देखते हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट के पैसे खर्च होते हैं. सो सिर्फ अकाउंट ही नहीं देखते हैं, हम उनका परफॉर्मेंस देखते हैं. अगर एक फॉर एन एग्जांपल सपोज आप देखिए कि हम हरियाणा का जिक्र करते हैं कि मान लो हरियाणा के अंदर पुलिस विभाग है, तो पुलिस विभाग का क्या बजट है, उस बजट में कैसा पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है, सैलरी को छोड़ के बाकी आपके कन्वीनियंस के ऊपर कितना जा रहा है, आर्म्स पे ऊपर कितना जा रहा है, मेंटेनेंस के ऊपर कितना जा रहा है. इसकी सिवाय ये एक ऑडिट जो है ना, ये आपके अकाउंट्स का ऑडिट है, आपका जो पैसा है बजट का वो कहाँ कहाँ जा रहा है. लेकिन एक्चुअल ऑडिट क्या है कि पुलिस क्या करती है और वो करने के बाद वो इफेक्टिवनेस है भी या नहीं, ऑडिट का वो काम है. ओके. कुछ लोगों को गलत फहमी है कि हम सिर्फ पैसे का हिसाब किताब रखते हैं, ये गलत फहमी है. लोग क्या करते हैं, वो क्या ठीक करते हैं या नहीं है, या पब्लिक इंटरेस्ट के नाम से करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है उस पैसे से, उस पे ऑडिट, सही ऑडिट वही है.
ऐसा नहीं है कि आपके पास 100 करोड़ रुपया था और आपने इतना यहाँ कर दिया, इतना यहाँ कर दिया, इतना यहाँ कर दिया। करने के बाद उस 100 करोड़ का बेनिफिट लोगों को कितना मिला है, जिस बेनिफिट के लिए जो इंटेंडेड पर्पज़ था, क्या वो पर्पज़ पूरा हुआ भी है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो मेरे हिसाब से वो सारा पैसा गलत पैसा खर्च हुआ है। अगर कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया तो उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। क्यों नहीं ध्यान दिया? आप सैलरी लेके बैठ जाते हैं। मान लो एक पुलिस थाने में एक थानेदार बैठा हुआ है और जो जॉब पूरी नहीं कर रहा है, अपनी जॉब नहीं कर रहा, तो वो सैलरी जो ले रहा है वो भी गलत है। पर सैलरी की तो जरूरत ही नहीं पड़ती आजकल, वैसे ही इतनी मोटी कमाई हो जाती है ऊपर से। इसके ऊपर मेरे से ज़्यादा आप लोग जानते हैं, हिंदुस्तान की पब्लिक मेरे से ज़्यादा जानती है। मेरे विचार इस मामले में बहुत बहुत कठोर हैं। मैं बहुत कठोर एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को। तो ये है कि देखिए, जिसको आप करप्शन बोलते हैं ना, करप्शन को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है कि करप्शन है क्या। करप्शन ऐसा नहीं है कि पैसे का लेन देन ही करप्शन है, वो तो है ही, लेकिन करप्शन आपके विचारों की करप्शन है। अगर आपके विचार करप्ट हैं तो आप करप्ट आदमी हो। सपोज एक टीचर है और उसका स्कूल 8 बजे लगता है और वो 8 बजे जाने के बजाय 8:10 पे जाता है, 5 मिनट पहले छोड़ देता है। क्लास में जितना पढ़ाना चाहता वो नहीं पढ़ाता है। उसको जानता है कि मैं जानबूझ के मेरी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा हूँ, तो वो करप्शन है। तो ये जो विचार करप्शंस का जो है ना, ये एक डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है कि करप्शन है क्या। आपके विचार अगर करप्ट हैं तो आप करप्ट हो। जब मौका मिलते हैं आप पैसे बनाओगे। जब कुछ लोग ईमानदार इसलिए हैं कि उनको मौका नहीं मिला। वो कोई कह रहा था कि होनेस्टी इज द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो वही बिल्कुल सही बात है। इसलिए हम किसी को ये कहना कि हमारे, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, बीच में बता रहा हूँ आपको, कि कुछ लोग कहते हैं ना कि हिंदुस्तान में यार पैसे की कमी है। ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान में पैसे की कमी नहीं है। हाँ, हिंदुस्तान में पैसे को सही रूप से खर्च करने की कमी है। और उस खर्च करने में क्या है कि आजकल पूरा सिस्टम आपका डगमगा गया है। अब आप पैसे खर्च कर रहे हो। पहले पुराने टाइम में जब हमने ज्वाइन किया था सिविल सर्विसेज में, तो एक सुपरवाइजरी लेवल, एक तो डूअर लेवल होता है जो आप लोवेस्ट लेवल, कटिंग एज का, जहाँ लोग काम करते हैं। उसके बाद वो काम ठीक है या नहीं है, विद इन फ्रेमवर्क, टाइम फ्रेम हुआ, वो जिसको सुपरवाइजरी लेवल कहते हैं। और एक उसके ऊपर भी ओवर साइट का काम होता है कि जो सुपरवाइजर है क्या वो भी ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वो सिस्टम आजकल सिर्फ सिस्टम में रह गया है, इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे नहीं है। यही वजह है कि आप यहाँ देखिए, आप तो गिगनाव के रहने वाले हैं ना। गिगनाव और सिंघानी में कितने पेड़ कट रहे हैं रोज? डिफॉरेस्टेशन और इलीगल है। तो क्या यहाँ पे जो एसडीएम है, यहाँ पे जो डीसी है, यहाँ के जो मंत्री हैं, वो यहीं से गुजरते हैं? क्या उनको दिखता नहीं है क्या काम हो रहा है? इवन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। एक तो ये बात। दूसरी एक और चीज़, मैं आपको एक नई चीज़ बता रहा हूँ, आपको आइडिया होगा पर फिर भी। आजकल जैसे लोग, हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, कि विकास का नाम आजकल बहुत उछला है ना। विकास ढूंढ रहे हैं लोग कि कहाँ विकास क्या है। लोग कहते हैं कि हमने सड़कें बना दी, हमने पुल बना दिए, हमने बिल्डिंग्स बना दी, लेकिन देश किससे बनता है? लोगों से, विचारों से। देश किससे बनता है? देश एजुकेशन से बनता है। देश आपकी हेल्थ से बनता है। अगर देश के लोग बीमार रहते हैं, उनका देखने का कोई सही प्रबंध नहीं है, एजुकेशन आप ठीक नहीं दे रहे। नेल्सन मंडेला ने कहा ना कि अगर आप किसी देश को कमज़ोर करना चाहते हो तो उसकी शिक्षा प्रणाली को कमज़ोर करो, वो देश अपने आप कमज़ोर हो। विश्वगुरु कहने से नहीं बनता है। मतलब ये एक सिर्फ हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहाँ के लोग ये कहते हैं कि हम विश्वगुरु हैं। कोई भी देश, अमेरिका, जापान, स्विट्जरलैंड, किसी देश में सुना है कि वो कहते हैं कि हम विश्वगुरु हैं? आपको क्या ज़रूरत है कहने कि हम विश्वगुरु हैं? समथिंग इज फेसी। कोई चीज़ छुपाना चाह रहे हो। और जो कहते हैं कि हम विश्वगुरु हैं वो खुद पढ़े लिखे नहीं है। बहुत से लोग अपने सर्टिफिकेट छुपाए फिरते हैं और वो लोग विश्वगुरु करने की बात करते हैं। तो ये एक त्रासदी है। और मैं आपको एक चीज़ और, मतलब मैं जो क्या सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि हम
किसी एक पे उंगली उठाने के बजाय मेरी उंगली अगर किसी पे उठती है तो इंडियन मिडिल क्लास पे उठती है। इंडियन मिडिल क्लास सोई हुई है। जो सुपर रिच हैं उनको दे डोंट केयर, उनका तो जो बिजनेस इज बिजनेस, उनका वो बात है। और जो बहुत गरीब हैं उनको रोटी रोजी से फुर्सत नहीं है बेचारों को। मिडिल क्लास है जो आज डरी हुई है या सोई हुई है, क्यों सोई हुई है, क्यों डरी हुई है, ये उनको खुद सोचना चाहिए। जब तक आपके अंदर चेतना नहीं आएगी प्रोग्रेस नहीं हो सकती, डेवलपमेंट नहीं हो, विकास को ढूंढते ही रह जाएगा। जैसे आपने फिनेंशियल